this broadcast. First, with regards to the arguments that were put forth, the Muslim side says that the Vyas Taikhana was actually always with them and it was in their possession, and that is the reason why the puja should not actually take place. What is the argument, on the contrary, made by the Hindu side? See, before the Honorable Allahabad High Court and before the Honorable District Court of Varanasi, we have filed ample number of documents which go and suggest and show that Vyas Parivar was always in possession of the premises in question. In Deen Muhammad judgment itself, from 1800 till 1936, documents and decrees are filed in that judgment wherein which goes to show that the Vyas Parivar was in possession of the property. There is a map which is a very important piece of evidence which was filed by the British government before, in Deen Muhammad's case, before in 1936, which establishes and shows that Vyas Parivar Taikhana is there, and it is mentioned in that map. So all these are very crucial piece of evidence. Apart from that, under section 107 of the Indian Evidence Act, we had led additional evidence before the Honorable Allahabad High Court, wherein we have filed documents to suggest and show that from 2013 till 2023, Navahan part, which is Akhand Ramayana part, was happening in the Taikhana, which you are just showing on your screen. So all these things goes to show that illegally, without any written order, in November-December 1993, puja was stopped by a particular administration, and it was completely an unconstitutional act, and therefore we had gone to the Allahabad High Court and to the Honorable District Court of Varanasi, and the District Court of Varanasi was completely right in its order in passing and appointing receiver. Vishnu Shankar Jain, for the benefit of our viewers, if you could also encapsulate the arguments that have been put forth in the case, and more importantly, the caveat that has been filed in the Supreme Court, because Anjuman Intizam are essentially arguing the fact that the evidence is not strong enough, number one. Number two, nothing to really indicate that the place was earlier used for purposes of puja. And what does it essentially mean for the Hindu side in the days to come? See, the religious character of this premises in question is of a Hindu temple. So the essential argument which we had raised before the District Court of Varanasi and the Honorable Allahabad High Court were that the District Court has to determine the religious character of the property in question. And before the District Court of Varanasi, we had proved a strong prima facie case to go and show that Vyas Parivar was worshipping in the premises in question till November-December 1993. It is only in the month of November-December 1993 that this puja was halted without any written order, and they were dispossessed from the property in question. As I mentioned just earlier, that there are a lot of documents to show and prove this fact. Apart from that, we had also argued before the Honorable District Court of Varanasi and Allahabad High Court that Places of Worship Act has been violated in this case. In violation of Section 3 of the Places of Worship Act, this puja has been stopped. So all these arguments were raised before the Allahabad High Court, and under Section 151 of the CPC, the court has power that if there is any omission, that omission can be rectified and by virtue of combined reading of Section 151 and 152 of the CPC. Apart from that, ASI report has also been filed before the Honorable District Court of Varanasi, which goes and shows that this entire premises was a pre-existing temple was there in the premises in question. So our case is very, very clear, and all these arguments were raised before the Honorable District Court of Varanasi and High Court. And I think the order passed by the District Court of Varanasi is perfectly valid and legal. The 17th January order and 31st of January order. Well, thank you very much, Vishnu Shankar Jain, for joining us on This Is Exclusive and putting things into perspective as the roadmap appears to be quite clear from the Hindu side. When the matter comes up for the Supreme Court, it remains to be seen how it is taken forward. Shift focus now to the other story we are getting to you tonight, coming in from the state of Assam. Days after repealing the Muslim Marriage and Divorce Act in Assam, Chief Minister Himanta Biswa Sarma has now said that he will not allow child marriage till he is alive. Following Himanta's remarks, the opposition staged a walkout from the assembly. Take a look at this report, and then we go across to Assam Minister Jayanta Barua. Remember, it is he who had first tabled it on Friday and repealing the Divorce Act. We'll also bring him right now and
perhaps play out the report in a short while from now. A quick recap of what we know so far before we go across to Minister Barua for more on this. Remember, the Assam government has already indicated that this is the first step towards UCC. And Assam perhaps would be the fourth state to be looking into the UCC implementation. So how does that really happen? What's the roadmap like, and why exactly is the opposition up in arms in the state of Assam? Jayantamala Barua is joining us on this broadcast. In fact, Mr. Barua was the one who had on Friday tabled it. Thank you very much, Mr. Barua, for joining us on This Is Exclusive. Let me first begin by asking you, you're already saying that this is the first step towards uniform civil court. How exactly will you take this forward? While the opposition says that you are not even taking them on board, there is no discussion that is taking place. We have seen the kind of opposition that has come in from the AIUDF. First, I want to understand from you, what is the roadmap that the government is really looking at right now? The main roadmap is that to stop the child marriage, because our Honorable Chief Minister already declared that there will be no child marriage in our state. So to stop the child marriage in the territory of Assam, we must repeal the Assam Muslim Marriage Registration and Divorce Act 1935. Because in this act, this Assam Muslim Marriage Registration and Divorce Act 1935, there are some clauses. Through this act, one man can marry a child age of 5 or 7, 9. The below 18 years girls can be married in this act, because in this act some clauses there. So when our governments take step against the child marriage, that we have seen so many people, after arresting him, he is released from the court because of this act, of a provision of this act. So our government is totally taking strong step to stop the child marriage in Assam, to repealing this act, Assam Muslim Marriage and Registration and Divorce Act 1935. This is the main reason of repeal this act, to stop the child marriage in Assam. Mr. Barua, we have also seen the kind of crackdown that came in from Assam police over the last couple of months. Was there some sort of a blueprint that was prepared by your government in order to tackle what the Chief Minister has been saying, growing menace in the state? However, the opposition calls it yet another attack on the minorities. But first, I want to understand from you, what is it that led to a situation where you all have finally been able to table this in the Assembly? How challenging has it been? One thing is that this act was repealed only for the stop the child marriage. The opposition people, mainly this AUDF party and Congress party, against this act, against this repeal of this act, because we cannot understand why they are against this act. Because every citizen in Assam want to stop the child marriage, and we have so many record in Assam that the clauses of in this act, so many child marriage was happened, and after the arresting the people who done the child marriage, they are become released through this provision of this act. So our government takes step to repeal this act. They are relating to this step forwards to UCC, because this is not the early step of UCC. It was done only for the stop the child marriage. So we request all the honorable member of the Assembly that you must understand the sentiment of the people, because in Assam, all Muslim people and all Muslim girls, all Muslim women wants to stop the child marriage, because for the child marriage, there are for this act, so many child marriages happen and so many divorce
happen through this triple talaq and this with this act. So every woman of Muslim woman wants to repeal this act. So all the women's community of Muslim heartily welcome this decision of Assam government. So I think that they are doing only for the political motivation. They are doing against only for the political motivation. So I request everybody to stand with our government and stop the child marriage entire in Assam. Mr. Barua, one final question that I would like to take from you, because I'm told that your government has already started working towards the implementation of UCC. The work is already on. I want to understand from you, what exactly is the timeline like? By when do you think that Assam would be in a position to implement it just on the lines of what Uttarakhand has done? This is not the step of UCC, because our government till now our government not decided to go to adopt the UCC. So our government is doing this repeal this act only for stop the child marriage. UCC is another thing. In our government, in our cabinet, UCC, about the UCC we are not discussing till now. And we are not planning to come through UCC. So this is not related to UCC. This is only related to stop the child marriage. Well, thank you very much, Minister Barua, for joining us on this broadcast. We're hoping that at 10 p.m. you'll also be joining us with Editor-in-Chief Arnab Goswami on this big move that has been made by the Assam government. That's all that we could pack in this edition of This Is Exclusive. On the other side, news and updates continue. India completely crumbles as CPI officially ditches Congress. Sources say Rahul to exit Wayanad. हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 सुनाते रहेंगे, इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा। और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5 आपके सामने आएगा। ये 5 की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। 5 के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज
बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। नंबर प्लेट पर लेकर जाइए। HR 51 BV 1480। आपने जिक्र किया है उस हर प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे जो एविडेंसेस है कलेक्ट की जा रही हैं और जो संदिग्ध गाड़ी आई है उसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है सर वही गाड़ी है जिसमें हमलावर आए थे। जांच की जा रही है, जांच का विषय है। मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3-3:30 बजे के बाद। FIR दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। FIR में जो नाम है और जो आरोपीगण हैं जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए SP साहब ने कोई, आप देखिए कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो प्रशासन ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस के कार्रवाई से आप खुश नहीं? पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? एक मीडिया में खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? मैं इसमें यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। बाहर के गैंग का इसमें कोई लेना देना नहीं लगता मुझे। और जिस पे हमें शक है वो FIR में उनके नाम है। पुलिस प्रशासन से
यही मांग है कि जब जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करें, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अभय चौटाला ये बताया कि ये 6 महीना पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, उसके बाद भी नहीं दिया गया। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से ये डिमांड कर रहे थे, बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार CID की रिपोर्ट भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से या हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे। और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। बीजेपी को छोड़कर जो तमाम हरियाणा के दल हैं, जैसे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबने सपोर्ट में आए हैं आपके, इसको कैसे देखें? सपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि भाई दुर्घटना से पहले अगर सपोर्ट करते तो और भी अच्छा होता। हमने जो FIR है, जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने FIR दर्ज कर दी है। FIR दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 DSPओं की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक $15,000 placements in 2022-23. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 सुनाते रहेंगे। इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5 आपके सामने आएगा। ये 5 की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है।
5 के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। See behind me are the video vans and the chariots ahead of the 2024 Lok Sabha Assembly elections. That is going to be the core campaign trail for the BJP right now ahead of the Lok Sabha Assembly elections. These chariots have been flagged off by the National President of the BJP, JP Nadda. You can see all the organizational ministers are also present here, and at these chariots, interestingly you are going to see are going to be the suggestion box for the Sankalp Patra that the BJP has announced will be launched post the 15th March. These chariots who have been decorated with the Viksit Bharat Modi Ki Guarantee logo are going to also do the campaign for whatever has been achieved by PM Modi's government in the past 10 years. And all these 10 years work of the Modi government is going to be told to the people and going to ask them what are their expectations for the governance ahead of the assembly polls for the next 5 years. Remember, these are 6,000 video vans and also the chariots which will be going in every Vidhan Sabha ahead of the polls, and by the end of 15th March, approximately 1 crore, in fact more than 1 crore suggestions will be collected by the BJP before launching their Sankalp Patra ahead of the Lok Sabha Assembly polls, which is going to be a huge
compilation of also the suggestions that have been given by the people of the country. This is today on 26th February that the BJP has flagged off these chariots, what you can see, and all the ministers are present here. BJP National General Secretary Tarun Chugh is also present here. The wall over there you can see has all the listed elements of the welfare schemes of the BJP as well. साथियों, बीते दशक में हमने एक और नया आयाम जोड़ा है। ये आयाम है वोकल फॉर लोकल का। आज पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का जन आंदोलन चल रहा है। टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट का पोटेंशियल कितना अधिक है। इसलिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को लॉन्च किया है। सरकार का जोर इस सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल पर भी है। सरकार के ऐसे प्रयासों की वजह से ही इस सेक्टर में विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। जब देश और दुनिया पीपीई किट्स और मास्क की भारी कमी से जूझ रही थी, तो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर आगे आया। हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 ऐप के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 ऐप सुनाते रहेंगे। इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा। और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5 ऐप आपके सामने आएगा। ये 5 ऐप की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। 5 ऐप के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं।
प्लेट पर लेकर जाइए। HR 51 BV 1480। आपने जिक्र किया है उस हर प्रकार के जो CCTV कैमरे हैं उनसे जो एविडेंसेस है कलेक्ट की जा रही हैं और जो संदिग्ध गाड़ी आई है उसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है सर वही गाड़ी है जिसमें हमलावर आए थे। आज जांच की जा रही है, जांच का विषय है। मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3 साढ़े 3 बजे के बाद। FIR दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। FIR में जो नाम है और जो आरोपी गण है जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए SP साहब ने कोई, आप देखिए कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो चाचा जी ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस के कार्रवाई से आप खुश नहीं? पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? एक मीडिया में खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? मैं इसमें यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। बाहर के गैंग का इसमें कोई लेना देना नहीं लगता मुझे। और जो जिस पे हमें शक है वो FIR में उनके नाम है। पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जब जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करें, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अभय चौटाला ये बताया कि ये 6 महीना पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, उसके बाद भी नहीं दिया गया। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से ये डिमांड कर रहे थे। बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार CID की रिपोर्ट भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से या हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे। और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। बीजेपी को छोड़कर जो तमाम हरियाणा के दल हैं, जैसे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबने सपोर्ट में आए हैं आपके, इसको कैसे देखें? सपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि भाई दुर्घटना से पहले अगर सपोर्ट करते तो और भी अच्छा होता। हमने जो FIR है, जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने FIR दर्ज कर दी है। FIR दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 DSPOं की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगी, उस सभी को कलेक्ट किया जाएगा।
अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई सर? अभी आप बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी। कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सर्वविदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चले। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जन का सेवा करना, जनता के बीच में रहना। और ऐसे में जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। $15,000 placements in 2022-23. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 सुनाते रहेंगे। इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5 आपके सामने आएगा। ये 5 की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। 5 के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं।
नंबर प्लेट पर लेकर जाइए। HR 51 BV 1480। आपने जिक्र किया है उस हर प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे जो एविडेंसेस है कलेक्ट की जा रही हैं और जो संदिग्ध गाड़ी आई है उसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है सर वही गाड़ी है जिसमें हमलावर आए थे। आज जांच की जा रही है, जांच का विषय है। मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3 साढ़े 3 बजे के बाद। FIR दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। FIR में जो नाम है और जो आरोपीगण हैं जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए SP साहब ने कोई, आप देखिए कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो प्रशासन ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस के कार्रवाई से आप खुश नहीं? पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? एक मीडिया में खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? मैं इसमें यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। बाहर के गैंग का इसमें कोई लेना देना नहीं लगता मुझे। और जिस पे हमें शक है वो FIR में उनके नाम है। पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करें, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अभय चौटाला ये बताया कि ये 6 महीना पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, उसके बाद भी नहीं दिया गया। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से ये डिमांड कर रहे थे। बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार CID की रिपोर्ट भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से या हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे। और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। बीजेपी को छोड़कर जो तमाम हरियाणा के दल हैं जैसे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबने सपोर्ट में आए हैं आपके, इसको कैसे देखते हैं? सपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि भाई दुर्घटना से पहले अगर सपोर्ट करते तो और भी अच्छा होता।
टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 सुनाते रहेंगे, इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा। और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5 आपके सामने आएगा। ये 5 की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। 5 के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट्स सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। नंबर प्लेट पर लेकर जाइए। Hello and welcome. You're watching the biggest story tonight with me, Shavan Sen. Yet another setback for the Congress party, this time coming in from the state of Kerala. What really happens to Rahul Gandhi as the CPI has already fielded their candidate? We'll get you the latest and exclusive interview coming up on the biggest story tonight. But up first, these are the headlines we are tracking for you at this hour. After High Court wrap, Mamata government forced to act. Trinamool Congress says Shahjahan's arrest in the next 7 days. Trinamool Congress says Shahjahan's arrest in the next 7 days.
Uproar against Mamata government's removal. Congress leader's house vandalized after molestation. Under scanner for Liquorgate, Kejriwal skips enforcement directed summons yet again. Aam Aadmi Party says wait for court order. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma talks tough on child marriage. Says won't allow child marriage till he is alive. After Allahabad High Court dismissed Muslim side's plea over Puja at Gyanvapi case now in Supreme Court. Stand by for Republic Media Network's annual summit on 7th of March in the national capital. Honorable Prime Minister to be the chief guest, Home Minister and Finance Minister to deliver keynote address. Well, in a big setback for the India alliance, CPI has now ditched the Congress. CPI top boss's wife is set to contest from Wayanad. Sources have also suggested that Rahul Gandhi, in all likelihood, would be exiting from Wayanad and perhaps be contesting from Raibari. Now, in an exclusive conversation, Republic also spoke to CPI's Wayanad candidate Annie Raja. Annie Raja has now hit out at the Congress, saying that the Congress has no ground in Kerala. Not just the CPI, but also, remember, that's the statement coming in from the IUML. We have spoken to both the candidate from CPI as well as the IUML as far as Congress's position within the India alliance is concerned. Let's first listen in to what Annie Raja had to tell my colleague a short while back. CPI has announced its candidates for 4 Lok Sabha constituencies in Kerala. And in Kerala, the fight is between LDF, Left Democratic Front, and UDF, United Democratic Front. So that is what, according to the seats allotted to us in the Left Alliance, CPI has announced, and I am the candidate there in Wayanad. Nothing more, nothing less. Since starting, it was being said that the alliance and the seat-sharing formula between Congress and left parties will be worked out in the state of Kerala. It was being said CPI will contest on 4 seats and Congress also have seat from Wayanad. So what exactly is being preached by Congress? That is something else, and in ground the reality is something else. It is what a message being sent out. This is a wrong information you have got. And in Kerala, it is LDF versus UDF. It is like that for such a long time. Even last time also, it was last election also, it was like that. CPI contested in Wayanad also. So there is nothing new in that. In Kerala, that is the political situation. Left Democratic Front and versus United Democratic Front. So can it be said that left doesn't see Rahul Gandhi as a contender or Congress as a contender in Kerala or in Wayanad, from where Rahul Gandhi is already a member of parliament? I didn't get you. I'm asking left or the LDF, UDF, the parties which are the main front parties in Kerala, they don't see Congress party as a main contender party in Kerala. UDF, Congress is the leader of UDF, United Democratic Front. Congress is the leader. So it is left versus Congress, one can say. That is the political alliances in Kerala. Has Congress agreed and everything is good between left and Congress, with now you contesting from, you being the candidate from Wayanad, from Rahul Gandhi's constituency? Is Congress okay with that, or is there some sort of rift between the parties? You don't understand what I am saying. I am afraid that I failed to make you understand the thing. You see, in Kerala, there are 2 fronts. The one is Left Democratic Front and the other one is United Democratic Front, which is headed by or led by Congress party. Okay. So in the Left Democratic Front, in that alliance, CPI is contesting in 4 seats, and one of the seats is Wayanad. Last time also CPI contested. Congress also contested. This time also Congress will contest. We don't know who will be the candidate, but CPI has announced its candidate. My colleague Ashwin. Ashwin, in fact,
the rift is now out in the open. Annie Raja essentially is trying to indicate that this is the political compulsion in the state of Kerala, but this has been brewing for a very long time. This resulting in a situation that Rahul Gandhi has to exit from Wayanad. Absolutely, Shavan, because Annie Raja has given several interviews even to the Malayalam channels in Delhi, and there is not even a squeak of mention of the Indie alliance itself, which shows that there's a clear-cut rift in what has happened. When some of the media colleagues had asked her why is she contesting from Wayanad, she stuck to the ground that she does not know about the other parties. That's a prerogative of another party. We do not know. As far as CPI is concerned, we are contesting from there. So we clearly see in the entire vocabulary what Annie Raja today, the complete range of interviews that she has given to several Malayalam media as well. She has completely omitted the Indie alliance itself from the entire narrative itself, which clearly shows that it seems to be not working over there. Of course, the CPI had contested last time also, as she rightly pointed out to our reporter. But what is interesting is that how come such a high-profile leader? In fact, Annie Raja is born in Kannur. She is from Kannur itself. But apart from that, her political roots are, she has been based in Delhi. So she coming over here to contest in Rahul Gandhi's sitting constituency certainly is clearly showing that there is a rift. When asked specifically also to Annie Raja why is she contesting when Rahul Gandhi is a formidable member of the Indie alliance, she refused to answer the questions. So certainly what essentially proves is that CPI is definitely not keen to have an alliance itself. It's all seems to be like an application on the top of the skin. That is it, and there's nothing deep. There is no deep alliance itself. Is what we can understand from the words that has been spoken by Annie Raja itself. So clearly, where Rahul Gandhi will be contesting needs to be seen. Definitely, it seems like Rahul Gandhi won't be contesting from Wayanad, perhaps from Raebareli, as SP has Samta Party had recommended, or perhaps in Karnataka. A few months ago, Karnataka Congress had also asked him to contest from there. That remains to be seen. And in a week's time, the end of this week, the Congress will be giving out the candidate list. The Congress and UDF will be giving out the candidate list by the end of this week, where around 17 seats Congress will be contesting, 3 seats Muslim League will be contesting. So that remains to be seen. By the end of this week, we will get to know officially whether Rahul Gandhi will be contesting from Wayanad. However, the rift remains open, and the wound of the rift is very clearly seen. Shavan. Well, in fact, it's not just the CPI. The reaction that has now come in from the IUML, who has taken on the Congress party. In fact, they're saying that they're not even a contender. Pretty much what we have seen in the national capital too, when the Aam Aadmi Party hit out at the Congress, saying that the Congress does not even deserve a single seat. Now, we've spoken to the IUML. This is what IUML had to say about ally Congress. One thing, sir, today LDF has announced Annie Raja as a candidate from Wayanad, from Rahul Gandhi's seat. So what exactly is the message which India Alliance is sending across? Kerala is quite natural, In Kerala, this all India, this India Alliance is there at the same time. Kerala and yesterday, Kerala and in Calcutta, and it is entirely because we are fighting each other. Because Kerala is CPM-led LDF and the Congress-led UDF. Okay. They are fighting each other. In that case, it is quite natural that the left front will elected their own candidates. Quite natural. There is nothing strange in it. Okay, so you believe that this is the alliance of convenience, like the places where Congress is in direct fight with left party, there will be no alliance, and in the places where that is implied. When we made this India alliance, this was implied in that
in Kerala, places like Kerala and Kerala as well as West Bengal will have this type of alliance. Like convenience politics, sir, like sir, convenience politics. Yeah, that is the reason because Kerala, non CPM and CPM proper CPM, that this type of differences are there. Even in the administration also is there very well. So there's nothing special in that. So the seat allotted for Wayanad constituency was given to CPI from the CPM left wing. So CPI and CPM together have announced Annie Raja as the candidate for LDF. That is it. Okay. One more thing, Bashir sir. So can we say that the India alliance is only on paper? In ground, the reality is much different. No. How can you think like that? That's your interpretation is correct. We are at liberty. We have that while forming the India alliance, this was clear because in the political nature in these two states are different than the other states. So it is quite natural that they will fight each other. That's no problem. That was well known. It's not a new development there. One more thing, Bashir sir. Do you also feel that Rahul Gandhi as a member of parliament didn't fulfill his promises which he did to the people of Wayanad, and CPI this LDF can perform much better in Wayanad as compared to Congress, this Rahul Gandhi? Nothing like that. CPI, even if CPM, whatever it may be, they cannot even have what is called a small kind of impact in the Wayanad. Wayanad is a UDF constituency in which Congress at UDF will only succeed. That is such a sure seat as far as led by Congress is concerned. So you say that it is kind of a wrong decision by LDF. They should have waited and they should have let Congress only contest that from the alliance, India alliance. No, that everybody knows. All the parties in the India alliance, and we support the democratic kind of activity because Well, in fact, we're also getting in the first Congress reaction after that mega setback from the CPI. So you not only have the IUML now hitting out at the Congress party, several other ally members are now coming out saying that first, the seat sharing strategy has completely failed. The discussions never happened to begin with. Listen in to what Congress leader Udit Raj had to say. That's the first reaction coming in from the Congress party after the decision that was taken by the left parties. I'm joined by Congress leader Mr. Udit Raj. Sir, left has announced its candidate from Wayanad constituency. See what happened that we have a friendly fight over there. So I don't think that it is a very surprising thing. So what is the issue about it? I don't think that there is any ruckus in India Gathbandhan. Is India alliance just only on the paper, sir? No, it's in effect now. It is on the ground. You see the alliance with the Aam Aadmi Party, alliance with the Samajwadi Party, and other alliances will be now with other parties also. Whenever an iota of space, iota of ruckus is found in India Gathbandhan, they make hue and cry. And what happened about the BJP? So what happened is that this is not very unusual, it is expected. So what is the problem in it? I don't think there is any issue about it. Should Rahul Gandhi go back to his previous bastion, Amity? It's up to him to decide, it's a party to decide. And of course, you will see that in a few days of time, the things will be known to everybody. And it is up to him also, he is the supremo of the party, and of course,
our parliamentary board will decide that, and of course his personal choice as well. So this announcement further suggests that left has made it clear that there is much more that needs to be done in Wayanad constituency. I don't think that what happened, there is no BJP, either Congress party and its allies or left and allies. It's a friendly fight. Like in Punjab, main party is now Aam Aadmi Party, and principal opposition is Congress. Now the fight is between these two. That's why we decided to go separately. So already the precedence has been established of India alliance. So similar thing will happen in Kerala also. There is nothing unusual about it. Right. So this was Mr. Udit Raj from Congress Party with video journalist Manish Akil for Republic TV. On the other side, big development in connection to the paper leak investigation in Uttar Pradesh. Getting all the latest on the other side. $15,000 placements in 2022-23. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 ऐप के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 ऐप सुनाते रहेंगे। इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5 ऐप आपके सामने आएगा। ये 5 ऐप की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। 5 ऐप के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं।
और नंबर प्लेट पर लेकर जाइए। HR 51 BV 1480। आपने जिक्र किया है उस हर प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे जो एविडेंसेस है कलेक्ट की जा रही हैं और जो संदिग्ध गाड़ी आई है उसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है सर वही गाड़ी है जिसमें हमलावर आए थे। आज जांच की जा रही है, जांच का विषय है। मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3-3:30 बजे के बाद। FIR दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। FIR में जो नाम है और जो आरोपीगण हैं जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए SP साहब ने कोई, आप देखिए कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो शायद ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस के कार्रवाई से आप खुश नहीं? पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? एक मीडिया में खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? मैं इसमें यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। बाहर के गैंग का इसमें कोई लेना देना नहीं लगता मुझे। और जो जिस पे हमें शक है वो FIR में उनके नाम है। पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जब जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करें, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अभय चौटाला ये बताया कि ये 6 महीना पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, उसके बाद भी नहीं दिया गया। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से ये डिमांड कर रहे थे। बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार CID की रिपोर्ट भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से या हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे। और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। बीजेपी को छोड़कर जो तमाम हरियाणा के दल हैं, जैसे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबने सपोर्ट में आए हैं आपके, इसको कैसे देखें? सपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि भाई दुर्घटना से पहले अगर सपोर्ट करते तो और भी अच्छा होता। In 2022-23, at Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals.
हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 सुनाते रहेंगे। इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5 आपके सामने आएगा। ये 5 की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। 5 के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार साथियों, बीते दशक में हमने एक और नया आयाम जोड़ा है। ये आयाम है वोकल फॉर लोकल का। आज पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का जन आंदोलन चल रहा है। टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट का पोटेंशियल कितना अधिक है। इसलिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को लॉन्च किया है। सरकार का जोर इस सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल पर भी है। सरकार के ऐसे प्रयासों की वजह से ही इस सेक्टर में विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। जब देश और दुनिया पीपीई किट्स और मास्क की भारी कमी से जूझ रही थी तो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर आगे आया। उसको लगता है नेचुरल कलर में बनाया गया कपास और उसमें से बना हुआ धागा, कोई भी प्रकार का कलर न लगाए हुए मुझे मिल सकता है क्या? यानी दुनिया बहुत अलग मार्केट है, अलग मांग है। हम क्या करते हैं कि भारत स्वयं में इतना बड़ा मार्केट है, भले ही लोग कपड़ों की साइज छोटी मोटी करते रहते हो, लेकिन फिर भी मार्केट तो बड़ा है ही है। 2-3 इंच कम हो जाएगा। भारत का ये इतना बड़ा क्षेत्र है और भारत के करोड़ों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। आप कभी कोणार्क के सूर्य मंदिर जाएंगे, सैकड़ों साल पहले उस कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों ने जो कपड़े पहने हैं, आज के मॉडर्न युग में भी जो बहुत मॉडर्न कपड़े लगते हैं, वो सैकड़ों साल पहले पत्थर पर उकेरे गए हैं। $15,000 placements in 2022-23. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals.
हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 सुनाते रहेंगे। इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5 आपके सामने आएगा। ये 5 की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। 5 के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। नंबर प्लेट पर लेकर जाइए। HR 51 BV 1480। आपने जिक्र किया है उस हर प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे जो एविडेंसेस है कलेक्ट की जा रही हैं और जो संदिग्ध गाड़ी आई है उसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है सर वही गाड़ी है जिसमें हमलावर आए थे। जांच की जा रही है, जांच का विषय है। मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3 साढ़े 3 बजे के बाद। FIR दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे।
एफआईआर में जो नाम है और जो आरोपीगण हैं जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए एसपी साहब ने कोई, आप देखिए, कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो शासन ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस के कार्रवाई से आप खुश नहीं? पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? एक मीडिया में खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? मैं इसमें यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। बाहर के गैंग का इसमें कोई लेना देना नहीं लगता मुझे, और जो जिस पे हमें शक है वो एफआईआर में उनके नाम है। पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जब जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करें, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अभय चौटाला ये बताया कि ये 6 महीना पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, उसके बाद भी नहीं दिया गया। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से ये डिमांड कर रहे थे, बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार सीआईडी की रिपोर्ट भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से या हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे। और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। बीजेपी को छोड़कर जो तमाम हरियाणा के दल हैं, जैसे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबने सपोर्ट में आए हैं आपके, इसको कैसे देखें? सपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि भाई दुर्घटना से पहले अगर सपोर्ट करते तो और भी अच्छा होता। कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सर्वविदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं जाए। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जनता सेवा करना, जनता के बीच में रहना। और ऐसे में जहाँ जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। 15,000 placements in 2022-23. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals.
हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 सुनाते रहेंगे, इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा। और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5 आपके सामने आएगा। ये 5 की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। 5 के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। नंबर प्लेट पर लेकर जाइए। HR 51 BV 1480। आपने जिक्र किया है उस हर प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे जो एविडेंसेस है कलेक्ट की जा रही हैं और जो संदिग्ध गाड़ी आई है उसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है सर वही गाड़ी है जिसमें हमलावर आए थे। जांच की जा रही है, जांच का विषय है। मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3-3:30 बजे के बाद। FIR दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे।
एफआईआर में जो नाम है और जो आरोपीगण हैं जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए एसपी साहब ने कोई, आप देखिए कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो शासन ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस के कार्रवाई से आप खुश नहीं? पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? एक मीडिया में खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? मैं इसमें यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। बाहर के गैंग का इसमें कोई लेना देना नहीं लगता मुझे। और जिस पे हमें शक है वो एफआईआर में उनके नाम है। पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जब जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करें, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अभय चौटाला ये बताया कि ये 6 महीना पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, उसके बाद भी नहीं दिया गया। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से ये डिमांड कर रहे थे। बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार सीआईडी की रिपोर्ट भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से या हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे। और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। बीजेपी को छोड़कर जो तमाम हरियाणा के दल हैं, जैसे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबने सपोर्ट में आए हैं आपके, इसको कैसे देखें? सपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि भाई दुर्घटना से पहले अगर सपोर्ट करते तो और भी अच्छा होता। $15,000 placements in 2022-23. At Amity, we are committed to nurturing passion. हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 सुनाते रहेंगे। इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा
और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5F आपके सामने आएगा। ये 5F की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। 5F के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। नंबर प्लेट पर लेकर जाइए। HR 51 BV 1480। आपने जिक्र किया है उस हर प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे जो एविडेंसेस है कलेक्ट की जा रही हैं और जो संदिग्ध गाड़ी आई है उसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है सर वही गाड़ी है जिसमें हमलावर आए थे। आज जांच की जा रही है, जांच का विषय है। मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3 साढ़े 3 बजे के बाद। FIR दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। FIR में जो नाम है और जो आरोपीगण हैं जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए SP साहब ने कोई
Hello, welcome you watching The Burning Question with me, Shaban Sen. Let's first take a look at the headlines you are tracking at this up. After High Court rap, Mamata government forced to act. Trinamool Congress says Shah Jahan's arrest in the next 7 days. India completely crumbles as CPI officially ditches Congress. Under scanner for Liquorgate, Kejriwal skips 7th ED summon in a row. Defiant Aam Aadmi Party says wait for court order first. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma talks tough on child marriage, says won't allow child marriage till he is alive. Stand by for Republic Media Network's annual summit on 7th of March in the national capital. Honorable Prime Minister to be the Chief Guest, Home Minister and Finance Minister to deliver keynote address. Well, the India alliance has completely fallen apart ahead of the 2024 battle. Now, today the left announced a CPI boss's wife will fight against Rahul Gandhi in Wayanad. The left maintains that the Congress is losing the ground in Kerala. While the Congress is essentially downplaying the big setback, it now appears that the India alliance is just on the paper. Aam Aadmi Party, in fact, hit out at the Congress saying that they do not even deserve a single seat. They are not in alliance in the state of Punjab. As far as West Bengal is concerned, ladies and gentlemen, there too the same story plays out, with Chief Minister Mamata Banerjee says that there is no question of giving any seats to the Congress party. In fact, she also raises doubts that whether at all the Congress is actually going to cross the 40 mark. Take a look at the developments and then we begin the burning question. The Indy is slowly but surely losing the plot ahead of the crucial 2024 battle. Now, there is a fresh twist to the thriller in Wayanad. It is confirmed that Annie Raja will be leading the charge against Rahul Gandhi in Wayanad. She spoke to Republic in an exclusive conversation. We think that in all the constituencies, left can work much better than the Congress party. That is why we are in the contest. We are announcing the candidates, and the other left front parties will announce their candidates in the coming days. So yes, our politics is people-centric politics. The wife of CPI boss also said that Congress has no ground in Kerala. 4 seats. And one of the seat is Wayanad. Last time also CPI contested. Congress also contested. This time also Congress will contest. We don't know who will be the candidate, but CPI has announced its candidates. So, the BJP believes that Rahul will have to exit his own constituency. It is clear for us and the whole country. But Jairam Ramesh will come this evening saying that the lines are open, discussions are open, and this is the kind of alibi they're going to give. So, I mean, we are expecting that to happen. But the reality is over and out. Right? You rightly said tata bye-bye. But the Congress has downplayed the big announcement. No, it's in effect now. It is on the ground. You see the alliance with the Aam Aadmi Party, alliance with the Samajwadi Party, and other alliances will be now with other parties also. So what happened is that this is not very unusual, it is expected. So what is the problem in it? I don't think there is any issue about it. The big development comes amid top Congress leaders defecting to the BJP. And just days after, murmurs of veteran Congress leader Kamal Nath's switch to the BJP. One thing is well established. Congress is on the back foot and Indy has fully crumbled ahead of the polls. Bureau Report, Republic TV. Vivek Srivastava, to begin with you, all this while you've been asking one simple question, and that question has been, how many times has the NDA really sat for a meeting? Where is the alliance as far as the NDA is concerned?
Today, would you say the same? Because the fact is this, there is no India alliance. Even the left parties have come out in the open saying that they have no relevance. The Congress is completely irrelevant. No, I don't think that is what the left has said, and we are very much with the Congress in many states. We are fighting together in Bihar. We are supporting them in UP, in Madhya Pradesh, our trade unions, our cadre, we are with them. Certain states are having some exceptional cases in INDIA, like Punjab for that matter. Aam Aadmi Party is going alone. Trinamool Congress doesn't want a tie-up in West Bengal. Kerala, we are having a contest. But so exactly how does that work? Vivek Srivastava, how does that? I'll tell you how it works. How does the no, it's not pick and choose. How does the pick and choose really work here? I'll tell you how it works. It works because in the past, when we had a coalition governments in this country, we had third front governments of Deve Gowda, I.K. Gujral. We had a coalition government of Atal Bihari Vajpayee. Coalition always works this way. Many a times parties contest with each other in the state level. There are many pre-poll and post-poll alliance. However, the INDIA is totally committed to its common minimum program of secularism. And what do you have to say about? And when the IUML says, when the IUML says that the Congress is no force to begin with, Trinamool Congress chief says that perhaps this time Congress may not even cross the 40 mark. So what exactly are you really talking about? What national picture are you really talking about? Trinamool Congress is more or less a very strong regional force. They have a government in one particular state where they have their own interest and their own electoral calculations. Okay? Whereas so Congress, they are not hitting out. But Vivek, they are not. The fight is. Can you understand one thing, Vivek? Is the fight with the Bharatiya Janata Party, or is the fight within the alliance itself, the so-called alliance? The alliance is very strong. It is going very strong. I mean, the Aam Aadmi Party and the Congress. I mean, I've been saying for the last 6 months that people will tie up. But then the media was trying to say it will not tie up. There is a tie-up in Gujarat. There is a tie-up in Goa. There is a tie-up in Delhi. Okay, we do have the Congress party also now coming in. Umer Junaidi of the Congress is here joining us. Okay, the direct face-off. Let me. The direct face-off between Tom Varakan and Umer Junaidi. Tom Varakan, I'll come to you and then we'll have the Congress party back. But Tom Varakan, before you really respond to what the India Alliance essentially has to say, the question that many still ask you, and especially the opposition parties are asking, when did the Bharatiya Janata Party really care about their own alliance partner? So why are you so very concerned about what's happening within the India Alliance? We are in the business of politics, and it is not an NGO that's running when they talk about an alliance which does not exist on the ground. Can you imagine the Aam Aadmi Party in coalition with the Congress? They were at each other's neck in Delhi. And do you think their workers would work for them? I mean, this kind of, I call it paper alliance, that's all. It's a marriage on paper. The reality is their workers are the ingredients who are supposed to work. Where are they going to work? Kerala is a situation that is, as an example, Annie Raja coming in from Wayanad, and Annie Raja is not a pushover. So, I mean, in Bengal, what is the scene? They have said that less than 40 for Congress. If this is about alliance, then I think you don't need enemies, no? Umer Junaidi, the people, the voters would be utterly confused as to what exactly is this alliance all about, because in Punjab, you're not in an alliance. In Delhi, you are in alliance. In Kerala, you're not in an alliance. And this continues. The pattern essentially continues. So somewhere down the line, you have to understand the regional players who are actually coming forward are now saying that, look here, we don't need the Congress party, because if the Congress party is with us, this is exactly what will happen. The fate of the regional parties would be exactly what happened to the Samajwadi Party and the BSP in the previous elections. Good evening. First of all, I would like to say that I am on this debate not as a congressman, but though I support Congress because of the ideology followed by the Congress. Now, talking about the question you raised, the opposition is raising the question. First of all, the thing is that there is an alliance called India
because the parties are united to defeat the fascism, the fascist government, the BJP-led government in the country, which has, spoiled the economy of the country, which have left the youngsters unemployed, and the prices of the commodities, they have risen up. All the things have been damaged. That is the reason all the parties came on a platform against BJP to form a democratic government. But what has happened, Umer So the Junaidi? main motto. let me complete. Let me complete. Coming together, The main motto of the coming alliance, together the is main one motto thing. of the alliance is to No, but defeat Umer BJP. Junaidi, you're saying that they came together on certain issues. But where do they really take these issues to? How exactly are they going to really fight for it? Because the reality is that even before the fight has begun, they've actually given up. Who has given up? Who has given up? Nobody has given up. When you carry forward a alliance of more than 25 plus parties, all the democratic parties in the part of the democratic politics, you have the choices, you have the patience to listen, you have the patience to accept the discrimination done by the parties, you have to accept the allegations, if any, made within the alliance. That is the Democratic Party. That is the Democratic Alliance taken forward for the nation. So the main purpose of the alliance is to have the democratic faith in the country and the constitution, which has been damaged by the Bharatiya Janata Party. And in order to save the constitution, all the democratic parties have come on a platform to defeat BJP's I don't know where ideology exactly, of anti-India. whom are you really saving, where are you really saving, and what exactly is the plan? Umer Junaidi, it sounds really good. Perhaps from the drawing room, all this analysis saying that you saved the constitution, you're saving the democracy, but the fact of the matter is this, that you do not have the gumption to even fight an election. Because if you are serious about fighting this election, then perhaps you would not be jumping seats from one place to the other. From Wayanad to Raebareli, because you're not very sure. You're not very sure of what's going to happen. Narendra Modi can go from Gujarat to Varanasi. You have no problem. He said very You clearly have no problem. If Narendra Modi is going from Gujarat to Varanasi and jumping the seat. in 2019, and they want Rahul Gandhi to be... Vivek, allow Umer Junaidi to respond. Vivek, I'll give you the chance to respond, but let Umer Junaidi make his point, and then I'll go across to Vinay. And people of Amethi are regretting that what they have made a mistake in 2019 and they don't want to repeat in 2023. That is the reason they are wanting Rahul Gandhi to contest from there. Says who? And they are saying they're showering all Says the love who? and the support to Rahul Gandhi. Umer Junaidi says who? There was a point in time that you did not even have Pakka roads in Amethi, but that's not the scene today. And remember, only that cutting the ribbon is all that what Rahul Gandhi has essentially done in Amethi, be it the food park or several other projects which were all in limbo. Pinay, coming back to, the focus that the Bharatiya Janata Party has essentially put on the India alliance, it's almost like a walkover here. Shravan, there are 2-3 points. The first point is that earlier announcement of candidates by CPIM that clearly indicates that BJP has started a trend of earlier announcing the candidatures of in MLA and MP seats, and CPIM has followed. The second thing is that India alliance is finished in Kerala. They are finished in so many states. In Kerala, India alliance is no more. And the third point is, Shravan, that there was already a difference which was very visible in the last election. So let me quote the Kerala CPM Secretary Kodairi Balakrishnan in 2019 election, what he said when Rahul Gandhi was contesting for Wayanad. He said that the Muslim League, which has formed an alliance with Jamaat-e-Islami and SDPI, has more influence in Wayanad than Congress, and so in effect Rahul Gandhi will be contesting as a joint candidate of the Congress Jamaat SDPI alliance. So let me tell you, Shravan, that there was a difference between CPIM and Congress earlier, but the thing is that it is not like that CPI was not aligned to to be in alliance with the radical Islamist forces. But the point was that earlier there was only one exclusive Muslim party which was called All India Indian Union Muslim League, also called as Muslim League. So there was a tug of war in Kerala between Congress and left that to take Muslim League into their fold. But now, as on today, there are so many choices available.
Indian Union Muslim League is there, Madni's PDP is there, Jamaat-e-Islami Hind, WPI is there, and Popular Front of India's SDPI is there. And my interest is that Madni's PDP, Jamaat-e-Islami Hind's WPI, and PDF's SDPI, are they going to be part of the India alliance or not? I am interested in that. Because last time, Rahul Gandhi was just not a candidate of Congress. He was also supported by the Popular Front of India, which is now a banned terrorist outfit. Shravan. So these are the 2-3 major points I think. You are confused. When you are confused, but okay. No, when I is very responding to confused, this, Vivek, counter him. You say that. Yeah. Oh no. Yeah. Vivek. Yes. Vivek, you say that it does work that you fight your own alliance partner in the states. Nationally, it's going to be different. What elections are you really talking about? I'll tell you. In this very election, this is not the state elections that we're talking about. If as far as the parliamentary elections are concerned, what state and what national picture are you really talking about? I'm talking about a past example which was set forth in 2004. In 2004 also. I think you need to unmute yourself, Vivek Srivastava. Yeah. Can you hear me? Am I audible? Hello? Am I audible? Yes, go ahead. Can you hear me? Yeah. See, all I'm trying to say is that, yeah. So, all I was saying was that already 2 third front governments, and in 2004, Kerala, Congress and the left fought against each other. Earlier, we used to fight in Bengal against each other. However, national politics is a different thing. To keep the communal forces like the BJP at bay, we always tie up at a national level and form government. We feel that yes. I've not understood. I understand your rhetoric. Yes. But Vivek, are you listening to what you are saying? Yes. Are you listening to what you are saying? 65 seats. We got 65 seats. If at all you want to fight so-called fascist forces, etc., etc., first of all, at least you need to aspire to win the seats. Here you can't even deal with a seat-sharing arrangement. Forget about winning seats. No, who was telling you that? Why exactly would then, if at all there is an alliance, then the alliance would have been there in the state of West Bengal. It would have been in Punjab also. You can negate it as much as you want. We believe that the seat sharing has not been done yet. Who all gives the information? The BJP's spokesperson or who? What information? No, we believe Congress is a secular party. Kindly, Mr. Umer Junaidi, before you I'll tell you what. You think you are sounding smart by simply saying, how do you know? Please, this is not a figment of imagination to begin with. Mr. Umer Junaidi, it is the Ahmad. Let me just finish. It is the Aam Aadmi Party themselves who have come on record to say that the Congress does not deserve even more than 1 seat in the national capital. Mamata Banerjee has come on record to say that, look, this time perhaps the Congress may not even cross 40. Sorry? How many seats Aam Aadmi Party whatever may be the case, they have thrown you out from Punjab. No. They have thrown you out from Punjab. In Punjab, they are not willing to accommodate because they feel in Punjab they are in a better position. In Delhi, they are on a perhaps on a sticky wicket. So they are like, okay, let the Congress deal with it. No, I mean, see, in fact, we're getting in some breaking news right now. Gentlemen, I'm just requesting you to stay on with us. We're getting in some big breaking news now coming in with regards to Paytm. In fact, this development comes in at a time when Paytm was pulled up by the RBI. Paytm founder Vijay Shekhar Sharma has now resigned from the board of directors. Now remember, essentially what has happened over the last few weeks, there has been multiple reach out to the RBI with regards to the functioning of Paytm itself, Paytm banks in particular. Back on 29th was when no new customers will be to be taken on board. Remember, Paytm has gone on an advertising campaign saying that everything is going to work out and the Paytm bank would continue operating. Now, a big development comes in. He steps down
as from the board of directors. We'll get it more information in a short while from now. We'll also try and connect with our business editor Sharmila for more details on this. A quick recap before we slip into a short break and come back to our debate. Paytm founder Vijay Shekhar Sharma steps down, this at a time when the RBI had flagged off malpractices on the part of Paytm, particularly with regards to the KYC registration of various users. This was one aspect that was flagged off by the RBI even in the past, but a circular thereafter was actually issued pulling up Paytm, saying that they perhaps cannot bring others on board, new customers on board. Came across as a big setback for Paytm. In fact, all that they would have been in a position to carry out is third-party usage, and particularly with regards to UPI transaction. Remember, Paytm happens to be one of the largest UPI transaction systems that have been put into place. But with this decision that came in from the RBI, it has certainly come across as a big setback. Questions were also being raised about the manner in which Paytm Bank was operating, flouting the KYC norms. Slipping into a short break. On the other side, we'll continue with our trending burning question. $15,000 placements in 2022-23. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 ऐप के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 ऐप सुनाते रहेंगे। इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5 ऐप आपके सामने आएगा। ये 5 ऐप की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। 5 ऐप के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं।
नंबर प्लेट पर लेकर जाइए HR 51 BV 1480। आपने जिक्र किया है उस हर प्रकार के जो CCTV कैमरे हैं उनसे जो एविडेंसेस है कलेक्ट की जा रही हैं और जो संदिग्ध गाड़ी आई है उसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है सर वही गाड़ी है जिसमें हमलावर आए थे। आज जांच की जा रही है, जांच का विषय है। मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3 साढ़े 3 बजे के बाद। FIR दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। FIR में जो नाम है और जो आरोपी गण हैं जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए SP साहब ने कोई, आप देखिए कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो प्रशासन ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस के कार्रवाई से आप खुश नहीं? पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? एक मीडिया में खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? मैं इसमें यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। बाहर के गैंग का इसमें कोई लेना देना नहीं लगता मुझे। और जिस पे हमें शक है वो FIR में उनके नाम है। पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करें, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अभय चौटाला ये बताया कि ये 6 महीना पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, उसके बाद भी नहीं दिया गया। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से ये डिमांड कर रहे थे। बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार CID की रिपोर्ट भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से या हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे। और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। बीजेपी को छोड़कर जो तमाम हरियाणा के दल हैं जैसे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबने Well, that big breaking news now coming in. 197 Communications Limited has now informed that the Paytm's Payment Bank Limited has essentially reconstituted its board, which means that Vijay Shekhar Sharma, who was at the helm of affairs as far as the Paytm Payments Bank is concerned, he's now stepped down. The board has been reconstituted. In fact, a statement has just been put out by 197 Communications. Remember, that happens to be the parent firm of Paytm Payments Bank. The former Central Bank of India chairman, in fact, a retired IS officer, 2 retired IS officers and the former executive director of Bank of Baroda have now joined the board of directors of Paytm Payments Bank. This comes at a time, remember, the circular that was issued by the RBI, there was a massive crackdown as far as the operations of Paytm Payments Bank are concerned. We'll take you through some of the details that are coming in, but just remember a quick recap of what's happened over the last few days and the directives that have essentially been given. Now, it was RBI which essentially suggested that the National Payments Corporation of India to consider Paytm's proposal. Paytm has now said that a platform for peer-to-peer payments is exactly what they would be doing. Just to simplify this for you viewers, remember Paytm Payments Bank that was also operating and getting consumers on board, RBI essentially indicated that there were malpractices pertaining to KYC.
And the very fact that they would not be able to bring in new customers on board, and starting from 29th of February, they would essentially operate more as a UPI transaction platform. Let me also quickly go across to our business editor and my colleague Saqib, who's joining us from the Bharat newsroom, getting us the latest details. Now, this comes across as a big news, keeping in mind that we'll try and reconnect with Sharbila in a short while from now. But before we do that, I'll just quickly take you through some of the developments and the statement that has been issued by 197 Communications. In fact, they say that Vijay Shekhar Sharma has also resigned from the board of Paytm Payments Bank to enable the transition. Now, the transition that we're essentially talking about, Saqib, here is that there is a new board that has been brought in. There is a proposal that has been given by the Paytm, which the RBI has essentially indicated that perhaps it could be taken into consideration. Does this also mean that somewhere down the line, Paytm has made an admission to the fact that they will have to bring about the much needed changes that were already suggested in the past by RBI? This development comes on a day when Finance Minister Nirmala Sitharaman held a meeting with all the top heads of fintechs across the country. They did come down to Delhi and have a meeting with the Finance Minister. Vijay Shekhar Sharma stepping down on a day when the Finance Minister met the top fintech heads conveys a strong message in itself. The government has come down hard on the fragile fintech ecosystem of the country. There is every possibility that Paytm would be asked to walk the talk. Every time Paytm has been asked to follow RBI regulation, there has been allegations that Paytm has not cooperated. One would have to wait and watch a day after Vijay Shekhar Sharma's exit from the board and him stepping down. How does the regulatory framework shape up? Tomorrow, there'll be an important RBI statement. In fact, we're expecting that anytime today or tomorrow. Soon after the RBI statement, which is keeping the fintech industry on tenterhooks. Everybody wants to know what really transpired in that meeting between the finance minister and the fintech heads. The sort of, if I may just run you through the sort of violations that Paytm has been accused of in the Paytm Payments Bank Limited, is essentially that, you know, the third party adversaries, the TPAs, they onboarded thousands of people, thousands of customers without verifying them, without doing the due diligence. Now, this one is a serious allegation at a time we are witnessing an expansion of UPI to rest of the countries, to the neighboring countries. Government has sounded a note of caution time and again. Paytm was given time. Now its top boss stepping down in itself is a strong signal that has gone to the entire Paytm industry. Now I'm joined by Rajat Mishra, who is an assistant business editor at Republic Business and has been tracking the economy and the corporate side of the story. Rajat, on a day when Paytm's parent company, 197 Communications, in a filing to the regulators and the market regulators, has clearly said that Vijay Shekhar Sharma has stepped down. I may tell our viewers that Vijay Shekhar Sharma stepping down has paved way for two senior former PSU bank heads. So is the message from government loud and clear that we mean business when it comes to the financial economy of the country, which has been a lot of focus? Rajat, how do you really divulge the fact that two senior PSU banks heads have been brought in, and they will constitute Paytm's board of directors? What is that message from the government, from the finance ministry? See, one thing that was very... stay on.
Sharma as far as Paytm Payment Bank was concerned. So basically this ouster, basically the constitution of a new board means that he has completely stepped back from the Paytm Payment Bank business, which was a long impending demand of the RBI also, because one of the allegations on the violation of the regulatory laws was that there were a lot of intervention of the CEO as far as Paytm Bank is concerned. And when you are in the business of banking, the fundamental premise that RBI has set is that the founder, CEO, and the entire business should work in the silos. There should not be any intervention from the side of the CEO or from the various companies. So that is the one thing. So the constitution of a new board and some people or the CEOs from the PSUs who have joined on the newly constituted board shows that there is a signal that is being tried to send that Paytm CEO is stepping back from whatever has happened and what the RBI was saying, that the constant intervention of CEO from the company side. Now that we have a new board in place and Vijay Shekhar Sharma has stepped down, we have received a lot of viewer queries on what happens to Paytm. What happens to the fate of Paytm? What happens to Paytm? Well, I would like to get a just sense from to stay on Saqib as you get us more details. Kishore, Saqib, hold on for a minute. We have Kishore Subramaniam, who's also joining us on this broadcast. Kishore, as an investment analyst, the message that has been sent out by the RBI is that you no longer can continue operating by violating the rules. And the fact of the matter is that the GST as well as Enforcement Directorate, they were basically looking at, they had flagged off the fact that there were massive violations in terms of KYC. There were massive violations in terms of documentation that was supposed to be done. And now the message is very clear. Either you shape up or you're out of business. So good evening to all panelists. But let me tell you one thing very important, that this RBI clampdown is very, very serious. And it's a message to all fintech companies that please get your act correct. You're dealing with third-party money. This is not a joke. This is public funds. You ought to be extremely careful. And India's darling in terms of the fintech, the first of its kind, which revolutionized payment as far as the common man was concerned, right from a 1 rupee kirana store to probably thousands and lakhs of rupees, have today gone into a mode where RBI has to use its iron hand and tell them that you please clean up your act. And what's more important to understand here is that there is no soft approach. And let me also tell people who generally think that, there is a bias, this is a government-sponsored stuff, there is nothing like that. RBI is an independent regulator. As an apex bank, it's done its duty best in ensuring that the clampdown is hard, severe, strict. And look at what has happened. The person, Vijay Shekhar Sharma, however nice a human being he might be, I believe when you violate the norms and do not play by the book, this is exactly what happens. And I think it's a perfect example of saving the common man's money. Well, thank you very much, Kishore Subramaniam, for putting this into perspective. Slipping into a short break. On the other side, news and updates continue. Trending burning question, powered by Reva University and Century Club Prime. हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 ऐप के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा
50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5F सुनाते रहेंगे, इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा। और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5F आपके सामने आएगा। ये 5F की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। 5F के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। नंबर प्लेट पर लेकर जाइए। HR 51 BV 1480। आपने जिक्र किया है उस हर प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे जो एविडेंसेस है कलेक्ट की जा रही हैं और जो संदिग्ध गाड़ी आई है उसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है सर वही गाड़ी है जिसमें हमलावर आए थे। जांच की जा रही है, जांच का विषय है। मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3 साढ़े 3 बजे के बाद। FIR दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। FIR में जो नाम है और जो आरोपीगण हैं जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा
हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए एसपी साहब ने कोई, आप देखिए कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो चाचा जी ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस के कार्रवाई से आप खुश नहीं? पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? एक मीडिया में खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? मैं इसमें यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। बाहर के गैंग का इसमें कोई लेना देना नहीं लगता मुझे। और जो जिस पे हमें शक है वो एफआईआर में उनके नाम है। पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जब जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करें, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अभय चौटाला ये बताया कि ये 6 महीना पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, उसके बाद भी नहीं दिया गया। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से ये डिमांड कर रहे थे। बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार सीआईडी की रिपोर्ट भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से या हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे। और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। बीजेपी को छोड़कर जो तमाम हरियाणा के दल हैं, जैसे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबने सपोर्ट में आए हैं आपके, इसको कैसे देखते? सपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि भाई दुर्घटना से पहले अगर सपोर्ट करते तो और भी अच्छा होता। हमने जो एफआईआर है, जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5